Hi viewers, this is your Raju sir. Today we shall discuss about another topic, page lambda cloning vector. I think last class I thought that the page lambda small variations. So page lambda is containing to the two life cycle, lysogenic life cycle and lotic life cycle. So today I shall discuss about today I shall continue your vectors cloning vectors, page lambda cloning vector. So you know that my dear students, here the page lambda cloning vector, we can show this page lambda cloning vector. So this is a engineered version of the bacterial page lambda. So engineered version, that matlab kya karna, we can cut to this DNA molecule from the page lambda. So we can use it to the engineering biotechnology, that is engineering technology. So in this page lambda is containing to the E. coli infects of the E. coli bacteria. So page lambda copper wo infect kar raha hai na, infect कर रहा है ना, पेज लैंड इज इन्फेक्टेड इनटू द ई कोलिन बैक्टीरिया. सो ई कोलिन इनसाइड बैक्टीरिया में क्या कर रहा है, हम लोगों को इंसेक्ट करना चाहिए. सो इंसेक्ट करेगा तो क्या करना, पेज लैंड क्या करना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं. सो आप लोग हम देखिए द सेंट्रल रीजन ऑफ पेज लैंडा क्रोमोसोम्स linear is cut with the restriction enzyme and digested DNA insert. So यहाँ पर क्या करना है, सेंट्रल रीजन ऑफ द पेज लैंडा क्रोमोसोम लीनियर सो इज कट विथ ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो यार द पेज लैंडा का डीएनए क्रोमोसोम क्या करना है, कट करने के लिए क्या यूज करना है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं. एंड वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करना है, इंसेक्टेड डीएनए. सो पेज लैंड इज कॉपर इंसेक्ट कर रहे हैं, वो डीएनए क्या कर रहा है ना, डाइजेस्ट कर रहे हैं. सो डाइजेस्ट करने के लिए वो पेज लैंडा यूज हो गया. एंड नेक्स्ट वन थर्ड वन पॉइंट देखिए, डीएनए इज पैकेज्ड in page heads to formed virus particles. So here the DNA copper है ना, so here the virus package में DNA क्या कर रहे हैं, DNA क्या कर रहे हैं ना, DNA point. So my dear students, we are learning about the page lambda third point. So here the third point, page lambda third point, we shall discuss to this page lambda third point. So DNA is packaged in page head to form virus particles. So DNA copper package हो गया ना, page lambda head के बारे में वो package कर रहे हैं. So once we can show to this image. So वो image देखिए आप लोग हम. So this is a page lambda. So here the page lambda is containing to the, this is a head part and this is a neck part and this is a tail part. So this one tail part. This is a tail, head and neck part is containing to the page lambda. So in this page lambda is having the DNA molecule. So here the DNA molecule is packing up the DNA molecule on the head part of the page lambda. So page lambda में वो DNA molecule क्या करना, पैकिंग हो गया. सो पैकिंग होने के बाद क्या करना, वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करना है, यहाँ पर पैकिंग हो गया वो डीएनए मॉलिक्यूल. हियर द पेज लैम्डा pages with the page lambda end of the page lambda chromosomes. So here the end of the page lambda chromosomes कितना होगा ना, 32 to 50 base pairs is contained to the page lambda. So page lambda में क्या करना, chromosome कितना होगा ना, so here the this one chromosome है. So this one chromosome कितना होगा ना, 32 to 52 chromosomes is having the page lambda. So this one है. So 32 to 52 base pairs. So here the base pairs is containing to the page lambda. आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. And next one क्या करना है, in this page lambda क्या करना है, insert to the E. coli bacteria. So E. coli bacteria में क्या करना, page lambda insert करेगा तो यहाँ पर replicate कर रहा है. So for example we can show to this diagrammatically, show to this one. So this is a page lambda. So this one page lambda is a viruses. So this one E. coli bacteria. So in this page lambda this one E. coli bacteria. In this page lambda tail portion is released to the some of the chemicals to denature to the E. coli bacteria cell wall. E. coli bacteria cell wall denature करने के लिए page lambda क्या कर रहा है, release to the some chemicals. So chemical release करने के बाद क्या करना है, ये denature हो गया. So denature होने के बाद क्या करना है, E. coli bacteria के cell wall denature होने के बाद क्या करना है, ये page lambda का this one क्या करना, डीएनए मॉलिक्यूल है. सो दिस वन डीएनए मॉलिक्यूल क्या करना ना, मूव इनसाइड. सो दिस वन इनसाइड मूविंग कर रहे हैं. सो वो मूविंग करने के बाद क्या करना ना, यार द पेज लैंड का वो मॉलिक्यूल क्या करना, मूव कर रहे हैं. सो मूव करने के बाद क्या करना, दिस वन देखिए
दिस वन क्या करना है ना डीएनए मॉलिक्यूल है. सो दिस वन क्या करना है ना वो इक्वलेंट बैक्टीरिया के कॉस्मिड है प्लाज्मिड है. सो दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है. वो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का साथ क्या करना पेज लैंड क्या करना इंसर्ट कर रहा है. इंसर्ट करने के बाद क्या करना ना पेज लैंड विच लाइफ साइकिल कर रहा है ना लाइटिक लाइफ साइकिल कर रहा है. सो लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या कर रहा है आप लोगों को पता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और लाइटिक लाइफ साइकिल. सो इन दिस लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या कर रहा है इंसर्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल टू डिनेचरेट टू क्लीवेज टू द मॉलिक्यूल्स. सो क्लीवेज करने के बाद क्या करना सब टोटल क्या करना वो सेल्स स्पॉइल कर रहा है डैमेज कर रहा है. सो डैमेज करने के बाद क्या करना वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करना क्लीवेज हो गया. सो बाय द रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम. सो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम में क्लीवेज होने के बाद क्या करना दिस वन टोटल रिप्लिकेट कर रहा है. सो रिप्लिकेशन ऑफ द क्लीवेज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर. सो दिस इज अ डीएनए नंबर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कंटेनिंग टू द पेज लैंडा. सो आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. सो दैट मतलब क्या करना यहाँ पर देखिए द लिंक्ड प्लास्मिड ऑलरेडी मैं बोल दी प्लास्मिड वेक्टर. द लिंक्ड प्लास्मिड वेक्टर यहाँ पर प्लास्मिड वेक्टर क्या है. सो देखो द लिंक्ड प्लास्मिड वेक्टर्स लार्ज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस साइट अवेलेबल ऑलरेडी मैं बोल दिए. सो व्हेन एवर द लिंक्ड ऑफ द प्लास्मिड वेक्टर. सो ये प्लास्मिड वेक्टर में क्या कर रहे हैं ना प्लेज लैम्डा लिंक किए. सो लिंक करने के बाद क्या करना है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दिस वन डीएनए मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर विच वन वो मॉलिक्यूल के साथ क्या करना है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. सो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या करना है लिंक्ड प्लास्मिड में क्या करना है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. सो हियर द प्लेज लैम्डा इज क्लोनिंग वेक्टर आर द यूजफुल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स देन द PUC19 plasmid vector. सो PUC19 प्लास्मिड वेक्टर पेज लैंड PUC19 प्लास्मिड वेक्टर में क्या करना है नंबर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल लार्ज नंबर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स हो वो करने के लिए क्या करना है पेज लैंडा यूज हो गया. आप लोग मस्ट भी अंडरस्टैंडिंग करिए. एंड नेक्स्ट लेट आई विल डिस्कस टू दिस इन विट्रो पैकेजिंग. ऑलरेडी मैं बोल दिया वो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा हो गया वो डायग्रामेटिकली मैं बोल दिया. वो इमेज करो नहीं तो पहले इमेज करिए वो प्रॉब्लम नहीं है. मैं इमेज किया ना वो इमेज करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है. वो इमेज करिए कैसे ट्रांसफर कर रहा है इन विट्रो पैकिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आप लोग वो इमेज करिए. एंड नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखिए. सो दिस वन नेक्स्ट वन क्या करना ना कॉज सीक्वेंसेस. सो कॉज सीक्वेंसेस में देखो यहाँ पर देखिए दिस वन देखो. सो दिस इज देखिए बैक्टीरियल फेज लैम्डा हेड. So this one bacterial phase lambda head. So this one क्या करना packing of the DNA molecule. So this one क्या करना packing of the DNA molecule. So here the packing of the DNA molecule is having the cos sequences. So this one क्या करना है equal sequences is having the DNA molecule cos sequences. So in this multiple length of the bacterial phase lambda DNA this one आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. ऑलरेडी मैं डायग्राम में शो किया. सो वो वाला करिए. दिस वन फेज लैंड में दिस वन हेड दिस वन डीएनए मॉलिक्यूल टेल एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना यहाँ पर क्या करना है टेल फाइबर्स आप लोगों को वो करना चाहिए. ऑलरेडी वो डायग्राम करो ये डायग्राम करो वो प्रॉब्लम नहीं है. दैट वन डायग्राम करिए. एंड नेक्स्ट वन देखो. सो नेक्स्ट वन क्या करना हाउ टू ट्रांसफर टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द फेज लैम्डा इनटू द सेल. ऑलरेडी मैं डायग्रामेटिकली शो किया. सो दैट वन करिए प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट क्या करना ना फेज लैम्डा क्या कर रहा है ना इक्विवेलेंट बैक्टीरिया के साथ गया. जाने के बाद क्या करना इक्विवेलेंट बैक्टीरिया का सरफेस एरिया सेल सरफेस एरिया में क्या करना वो रहता है. रहने के बाद फेज लैम्डा का टेल फाइबर्स है ना. सो वो टेल फाइबर्स क्या करना है दिस वन फेज लैम्डा का टेल फाइबर्स है देखो. सो दिस वन फेज लैम्डा का टेल फाइबर्स. सो हियर द टेल फाइबर्स इज रिलीज टू द केमिकल्स. टेल फाइबर्स रिलीज टू द केमिकल्स. वो टेल फाइबर क्या करना ना इक्विवेलेंट बैक्टीरिया पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं. सो यूज करने के बाद केमिकल रिलीज कर रहे हैं. केमिकल रिलीज कर क्या करना है. सो दिस वन सेल वाल है वो सेल वाल क्या करना रिमूव हो गया. रिमूव होने के बाद इट विल फॉर्म टू द कैनाल. सो वो कैनाल में क्या करना फेज लैम्डा क्या कर रहा है ना फेज लैम्डा डीएनए वो नीचे आ गया. सो हियर द फेज लैम्डा डीएनए क्या करना नीचे आने के बाद क्या करना यहाँ पर वो सेल का अंदर हैवन दिस स्मॉल सेल्स क्या करना वो डैमेज कर रहे हैं. सब डैमेज करने के बाद क्या करना वो रिप्लिकेट कर रहे हैं. आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. वो इमेजेस है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए प्रॉब्लम नहीं है. और नेक्स्ट वन क्या करना है नेक्स्ट वन देखो. नेक्स्ट वन देखिए दिस वन नॉट नीडेड. So this one not needed and this one strategy is not needed and insertion of the vectors. So insertion of the vectors is not needed and replacement of the vectors. Replacement of the vectors आप लोगों को पता है this vector has been two recognized sites for the restriction endonuclease
न्यूक्लियस फॉर द यूज फॉर द क्लोनिंग। सो यहाँ पर क्या करना, रिप्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर में आप लोग वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, सो दिस इज ए डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल देखिए, so replacement of the actor. So for example, my dear students, we are observing here, this is a circular DNA. For example, this is a circular DNA. So in this circular DNA having this recognized site, this one. So this one is a recognized site and this is a specificity of the site. So in this recognized site क्या करना है, in this recognized site is binding to the restriction endonuclease enzyme. So restriction endonuclease enzyme क्या करना, यहाँ पर binding कर रहे हैं. So binding करना के बाद क्या करना, यार the recognized site is this portion, देखो वो portion क्या करना ना, recognized site ऑफ द पोर्शन क्या कर रहे, क्लीवेज कर रहे, सो दैट मतलब क्या करना, ब्रेकिंग कर रहे हैं दिस वन। सो यहाँ पर क्या करना, वो डायग्राम देखिए, ब्रेकिंग हो गया। सो ब्रेकिंग होने के बाद क्या करना, अनदर वन जीन सेलेक्टेड डीएनए आर देयर। सो सेलेक्टेड डीएनए मतलब क्या करना, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, सो दैट मतलब पेज लैम्डा डीएनए इज हैविंग टू द इंसेक्ट टू द विच वन बैक्टीरिया, इक्वलेंट बैक्टीरिया। सो वो डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है ना, इंसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। सो वो डीएनए कैसे इंसेक्ट कर रहा है ना, सो इट विल यूज टू द लाइगेज एंजाइम। सो लाइगेज एंजाइम यूज करके क्या करना, वो डीएनए इंसेक्ट कर रहा है, ऐसे वो डीएनए क्या कर रहा है, इंसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज ए इंसेक्ट ऑफ द डीएनए। सो इंसेक्ट ऑफ द डीएनए इज आल्सो कॉल्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ द डीएनए। सो वन डीएनए इज लॉस्ड, सो हियर द वन डीएनए वन पीस इज लॉस्ड हियर, अनदर डीएनए मॉलिक्यूल क्या करना, यहाँ पर रख दिया। सो दिस इज ए इंसर्शन ऑफ द डीएनए और रिप्लेसमेंट ऑफ द डीएनए। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए। सो वो इंसर्शन ऑफ द